वो उदारीकरण और बेचीकरण में तब्दील हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। हमारा उदारीकरण और बेचीकरण के बीच में बहुत बड़ा फासला है। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि इस संविधान की तीसरी सबसे बड़ी मर्यादा है कि फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ वही, आप शुरू कर दीजिए 10 मिनट। फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यों के मिलकर ही ये संघ बना है और इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे, इतना विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ आपसे कि फेडरल स्ट्रक्चर को राज्यों के अधिकार के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं आप गोवा में, चुनी हुई सरकारों को मध्य प्रदेश में गिराते हैं आप, जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में गिराई जा रही है, यह खतरनाक लक्षण है जिसका जिक्र मेरे भाई कर रहे थे। वही आपातकाल की तानाशाही जो बिना लगाए आई जा रही है। मैं सिर्फ इतना कम करना चाहता हूं, 2 बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट, कि एक खतरनाक बात की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, दिल में सबको अच्छी लगेगी, मेरी 2 ही मिनट की बात थी, सबको अच्छी लगेगी, लेकिन बोलेंगे नहीं पार्टी प्रतिबद्धताओं से। पहले सांसद के अधिकार होते थे, विधायक के अधिकार होते थे, मंत्री के अधिकार होते थे, इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ती थी। आज इन तीनों ताकतों को, विधायिका को कमजोर किया जा रहा है, ये एक खतरनाक लक्षण है, ये उचित नहीं। हमारी सोनिया जी ने, कृपया खत्म करें, हम जो बात कह रही है आपको अच्छी लगेगी। सोनिया जी ने एक पत्र लिखा है 9 पॉइंट, बहुत अच्छा है, आप भी पढ़ लीजिएगा और इनको भी पढ़ा दीजिए, कह दीजिए उसको मान जाए तो 75 साल का सब कुछ पूरा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपको बधाई। ये कहते हुए, जो लोग लोकतंत्र को कैद करना चाहते हैं वो इंडिया आ रही है और आप जा रहे हैं, ये उद्घोष करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, आप समाप्त होंगे, देश अब आपको नहीं चाहता। इंडिया आएगा, इंडिया जीतेगा। माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, दूसरा नाम दीजिए। माननीय विजय सिंह रेड्डी जी, विजय शाही रेड्डी जी। Thank you, Deputy Vice Chairperson, sir. Madam, in many ways, the parliamentary journey represents so many struggles and so many achievements and also aspirations of people of India. And I have no hesitation to refer to the struggles that I have undergone during the 75 years, more particularly the struggles relating to the 1976 represents the darkest year of our parliamentary democracy, and the Congress party was responsible for it. Sir, the 42nd Constitution Amendment was passed by the then ruling Congress party in a most controversial circumstances. This has to be taken note of, madam. If the subsequent governments had not undone the horrors that have of the 42nd Amendment, the Congress party would have passed an unsavory laws to institutionalize the emergency in the country forever. So it is because of the anomalies that they have introduced have been undone. That is the reason why we are still here and our democracy is saved. Madam, the UPA regime was marred by capitalism, corruption, policy paralysis, and decline in economic growth. This is what their achievement is. The struggles I have already explained, and their achievements I have already explained, and more particularly in relation to Andhra Pradesh, what Congress party has done during the bifurcation has to be explained. Madam, despite protests,
Despite protests, Andhra Pradesh reorganization bill was passed in a most unruly manner, and which is a black mark for the democracy. And Andhra Pradesh hence was the biggest victim of the misuse of power by the Congress party. Madam, the live telecast of the parliamentary proceedings were cut off. A demand for the division of voting has been denied. All Andhra member of parliaments were unfairly suspended, and doors of Lok Sabha were closed. The passage of Andhra Pradesh reorganization bill was based on unscientific, irrational considerations, which has been authored by my friend Jairam Ramesh ji. Madam, the next point. You can go ahead with your comments, but I'll continue my observations. Madam, the governments may come and governments may go, but for sitting government, that is BJP government, is under an obligation to fulfill the statutory promises made by the previous government, that is Congress government, madam. Madam, the Congress party, one important point, madam, the Congress party has held the power for 50 years. 50 years out of the 75 years, and if any other party had been in place other than Congress party, I have no hesitation to say that India would have been a developed country by now, not a developing country, madam. It would have been a developed country. That is the achievement of the Congress party, insofar as democracy is concerned. This, you can go ahead. Evidence of this is in front of our eyes now. Madam, the non-Congress government in the past 10 years, you have been seeing, we have been watching, and what the performance is. Madam, parliamentary productivity. Average number of sitting days per year has decreased from 120 in 1950s to roughly 70 days at present, which is really alarming, madam. Madam, I'll have to give the comparative figures. In 2022, the Indian Parliament sat for 56 days, and US Congress sat for 158 days, and British Parliament sat for 137 days, and the Canadian Parliament sat for 96 days. I request the BJP government to increase the number of sittings of the Parliament so as to make the justice to the country, people of this country, madam. Madam, there is madam, youth particularly. The youth at present, the significance of youth and importance of youth is coming down slowly, and the participation in youth is also coming down. MPs in 25 to 40 age bracket has fallen from 26% in first Lok Sabha to 1 to 12% in 17th Lok Sabha, madam. Madam, welfare of backward classes. I request the government, Honorable Finance Minister is sitting here. I request the Honorable Finance Minister and also Prime Minister and BJP government to introduce reservation for BCs based on the population of BC population in this country. BCs constitute more than 50% in this country. Therefore, the reservation has to be given to the BCs based on the proportion of population. And no caste census has been conducted, and the last caste census has been done in 1931. Socio-economic population data on BCs has been released, madam. Madam, women reservation bill. The women constitute 50% in the population. YSR Congress party under the leadership of Jagan में मंडल कमीशन तो लागू हुआ, लेकिन उसकी सिफारिशों में जो अनेक खामियां रही उसको लंबे समय तक पूर्ववर्ती सरकारों के समय में दूर नहीं किया गया। आज वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश के पिछड़े समुदाय के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनकी समय समय पर हमने चर्चा की है। अध्यक्ष जी, हमने ये भी अनुभव प्राप्त किया कि सामाजिक न्याय की राजनीति केवल शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, अपितु इसका दायरा हमें सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की ओर भी ले जाने तक प्रयास करने की दरकार है। और इस दिशा में
बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्वप्न था कि देश में सही मायनों में लोकतंत्र पूरा तब होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो और इस असमानता को दूर करने के प्रयास सरकारों द्वारा किए जाएं, और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं लाके समाज के सबसे निचले और वंचित तबके को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम किया है और इस सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए हैं। कल ही अध्यक्ष जी देश को एक अभूतपूर्व सौगात मिली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में, और इस योजना के माध्यम से देश का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, जो बढ़ई है, दर्जी है, नाई है, नाव बनाने वाला है, मछली का जाल बनाने वाला है, लोहार है, सुनार है, ऐसे तमाम जो निचले तबके पे हमारे हाथ और औजार से काम करने वाले शिल्पकार और कारीगर होते हैं, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है। अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय की पहुंच, सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि न्याय की पहुंच अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक होनी चाहिए, और हमने ये अनुभव प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी संविधान दिवस के दिन देश को अपनी चिंता से अवगत कराया था कि आज भी न्याय की पहुंच की जो रफ्तार है वंचित तबकों तक, वो बहुत धीमी है, और इस रफ्तार को हमें तेज करने की दरकार है। न्याय की सुलभता समाज के